साध के संग न कबहू पावे, साध के संग सदा सुख पावे। साध के संग न कबहू धावे, साध के संग सदा सुख पावे। साध संग बस्त अगोचर लहै, साधु के संग अजर सहै। साध के संग बस थान ऊंचे, साधु के संग महल ऊंचे। साध संग बस्त अगोचर लहै, साधु के संग अजर सहै। साध के संग बसै थान ऊंचे, साधु के संग महल पहुँचै। साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म, केवल पार ब्रह्म। साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म। साध के संग पाए नाम नानक साधु के कुर्बान, नानक साधु के कुर्बान। साध के संग पाए नाम निधान, नानक साधु के कुर्बान। साध के संग न कबहू भावे, साध के संग सदा सुख पावे। साध संग बस्त गोचर लहै, साधु के संग अजर सहै। साध के संग बसै थान ऊंचे, साधु के संग महल पहुँचै। साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म। साध के संग पाए नाम निधान, नानक साधु के कुर्बान। साध के संग न कबहू धावे, साध के संग सदा सुख पावे। साध संग बस्त गोचर लहै, साधु के संग अजर सहै। साध के संग बसै थान ऊंचे, साधु के संग महल पहुँचै। साध के संग दृढ़ सब कर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म। साध के संग पाए नाम निधान, नानक साधु के कुर्बान। So welcome to the channel, and so today we are on the 4th stanza of the 7th Ashtapadi of Sukhmani Sahib part. So here Babaji is explaining to us the vast, immense benefits that we have when we are in the company of the holy people, the saintly souls. So Baba is saying, Sadh ke sang na kabhu dhave. So the mad race, the mad run in this world for nothing, such things do not happen when we are in the company of saints. Sadh ke sang sada sukh pave. There is peace and poise, because there is, clarity in the life, so there is always sukh. Even if there is no money, there is always sukh in the company of saintly people. Sadh sang bast agochar lahe, sadhu ke sang ajar sahe. So there are certain things which people cannot see, like blessings. We can't see blessings. So we can't see devotion. We can't see the peace that we get by meditating, by having divine knowledge. So satsang bast agochar, these things which are not comprehended, incomprehensible things, we get that. Sadh ke sang ajar sahe. So we get so much internal power that we are able to bear the unbearable things also in the life, the tough phase also. Sadh ke sang basai than ऊंचे, साध के संग महल पहुँचे. So when we are in the company of the saints, our self-esteem and our honor is at a very, very superior level. Basai than ऊंचे, साधु के संग महल पहुँचे, and our soul is able to travel and rest in the house, in the palace of Paramatma. महल पहुँचे. साध के संग दृढ़ सब धर्म,
साध के संग केवल पार ब्रह्म. If we are not in the company of saintly people, then they will say, what is the use of speaking truth? What is the use of an honest life? And they can degrade us. But when we are in the company of saintly people, so we have more and more faith in correct things in the life, in correct things like honesty, honest living, etc. Sadh ke sang dृढ़ सब धर्म, sadh ke sang keval par brahm, because saintly people are always in tune, in touch with par brahm, Paramatma, our creator Lord. Sadh ke sang pave naam nidhan, nanak sadhu ke kurban. So in this world, the wealth is, dollars, rupees, and currencies are there. But there is Naam Dhan also. So Naam Dhan is in the spiritual realm. It is Seva, Simran, Naam that makes us spiritually rich. Sadh ke sang paave Naam Nidhan. So we get the treasure of Prabhu Naam. So that makes us spiritually so rich. Then the outwardly wealth stops bothering us and it stops mattering also. Nanak Sadhu ke Kurban, and Baba Nanak is saying that I am sacrificed to such saintly people whose company is so much blessing. So this was the theme of the Shabad. So may Vaheguru Ji bless us, and we can continue the part of Sukhmani in a similar way. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh.